Hello, everybody. Welcome to TOI Digital, your daily guide to all that's happening in Indian cricket. Beyond the Boundary is the name of the show. As always, we've got a power pack panel. K. Srinivas Rao joins us from Mumbai. Sahil Malhotra joins us from Delhi or NCR. And we've got Dwaipen Datta, who's joining us from Chennai. Thanks a lot, gentlemen, for joining us today. And start off with you, Srinivas. It seems to me that this particular Indian team, which has left or leaving for Asia Cup, if you can't leave for Dubai as a group, where can you go as a group then? What is it? Are you going to Chennai? Are you going to Kolkata? Why couldn't they leave as a group for the Asia Cup? Well, these days they don't even. I am reading the latest reports. These days they don't even go for training sessions as a group. I recently read a report that Mr. Virat Kohli did a training session all by himself separately in London, while the rest of the team was doing a training session in India. So, well, I mean, see, I think the fault doesn't lie with the players. Players have always been like this. The fault lies with the BCCI. BCCI, there have been times when you have had administrators who would put the line straight off saying, no, this is how things will be done. That's a weak BCCI probably leads to such occurrences, I guess. No other answer for it, unfortunately. Sahil, KSR touched upon the Virat Kohli fitness test or non-fitness test or training session or whatever it is. Now, they haven't played any cricket as a group as well, whereas the other teams are playing some kind of white ball cricket as a group. Some of the players have not played any kind of cricket. And then to top it, then you've got this particular situation where the players are leaving one by one in separate batches for a tournament like this. Okay, it's not important, but there has to be a line drawn somewhere. Yeah, I think that's what the whole hue and cry was, right? 6 months back, right after the Border Gavaskar Trophy, everyone will stand in a line, one arm distance, the bags will be of the same color. ऐसा ही हुआ था ना वो post series review था that everything was because certain players were traveling certain ways. Now all that falls flat. Gautam Gambhir stays in Delhi, flies to Mumbai, takes the flight to Dubai from Mumbai. Maybe some last minute meetings with influential people of Indian cricket there, but just doesn't add up, right? Arshdeep reaches Dubai alone. Harshit Rana flies separately. Shubman Gill goes from Bangalore. Surya, I was seeing just 3-4 hours back, he left from Mumbai. Hardik, I think, left early morning today. So I don't understand what was this all about, or is it like कुछ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था कि जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको बुर्ज फेसिंग व्यू मिलेगा वो डाउनटाउन वाला मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांट यू रियली ट्रैवल एंड दैट होना चाहिए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देते तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम था थोड़ा आप और स्पेकुलेशंस को रेस्ट पे डाल देते बट क्लियरली नो वन नहीं केयर्स फिर अबाउट आपको एनीवन राइट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओगे तो फिर मैं पूछूंगा ना कि आप पाकिस्तान से खेलने चाहते हो क्या Dwaipen, Sahil makes a very valid point that 6 months pehle you had a massive review or that this can't happen, that can't happen. At that time, it seemed like it was targeted towards one person. Now it seems like all that is out of the window. And वो रूल भी बना है वो विराट का वहां पे कोई ट्रेनिंग सेशन हुआ है लंदन में very soon KSR will have to appoint somebody in London as a cricket correspondent to track we just have that one appointed person. Yeah, say it's different rules for we have different appointed results. we अच्छा, you had have that appointed, foresight we have appointed someone in London Uh, right? so yeah, it's a case of different rules for different results. अगर इंडिया एक छक्का पड़ जाता वो एटकिंसन एक छक्का लगा देता then they would have been traveling together. There is no doubt about it. It's a game of fine margins. It's a game of fine margins. Yeah, fine वो Sky, margin. वो Sky अगर वो catch नहीं पकड़ता, he wouldn't be T20 captain today. Yeah. But it's a game of fine margins, or everything is kind of knee jerk in Indian cricket. Indian cricket में दो चीज बहुत चलता है. एक is knee jerk reaction, another is optics. कि वहाँ पे गौतम गंभीर ने जो ड्रामा किया after the Australia series, that was also unnecessary. It was not necessary, but they had to show that they are doing something because the Australia result was disastrous. Now because it's 2-2, there is an air of feel good around it.
So they are back to their own ways. They are like that. No, Indian cricket has been like this, the superstar culture, and I think Asia Cup, like, we all know that India is far far ahead. ऐसे भी जीतेगा तो आराम से जा रहे हैं. So there is no problem in it. Only problem is कि वो दिखावे का जरूरत नहीं था. Like 4 months ago. Here, these different rules for different results and optics. These are the two games that BCCI have been playing for a very long time, and they did it again. So it's fine. This is how it has been all the time. So I am never surprised. So Kesar, he's right actually, Dwapan, because after that Australia tour, they beat England in the T20 series, in the ODI series, won the Champions Trophy, leveled the Test series in England. So everything is back on track. You're asking me? Yeah, I'm asking you. So everything is back on I don't track. know about back on track. I'm saying which if again depends on whose perspective you're looking at it from. So if I'm looking, let's say if I'm looking, since Gautam Gambhir is the talking about. So let's say if I'm looking at it from Gautam Gambhir's perspective, it's not back on track. It's on track. For the first time, something actually came on track when they won the Champions Trophy. Now, look at it from Gautam's perspective. Okay. We look at it from everybody's perspective. Now, we lost 0-3 at home to New Zealand. Okay. Disaster. Everybody admits probably the lowest that Indian Test cricket touched in the longest time. Who do you put the blame on? If I have to go back, let's go by the topic me and Chandesh were talking about in the afternoon today. Match ka mujrim kaun? Who was the match ka mujrim in that 0-3 loss? I can't put. See, Gautam had just joined the camp, right? Overnight, you are not supposed to take control of the entire. You're not supposed to take charge of the whole thing. I mean, it doesn't work. Does it work in a professional organization? हमारे organization, हमारे office में कोई join करता है, तो हम उससे expect करते हैं कि वो 2 महीने में पूरे कंपनी का भार अपने सर पे ले ले. नहीं. तब तक जो CEO रहा है, वो CEO का काम है ना भाई. So until then, the guy in charge was Rohit. To my mind, 0-3 was Rohit's responsibility, especially some of the decisions that were taken, especially, everything put together. That I'm not saying whether Rohit should have resigned or continued or whatever, but take that onus on yourself. Now, what is this blame game? Now, if England, whatever, it is 2-2, whereas England should have been 3-1. We should have ended the series in our favor. That is Gautam's responsibility. Not being able to win the series in England is Gautam's responsibility. Losing 0-3 to New Zealand was the responsibility onus that sits on Rohit's head. But to be fair, again, a young captain, I don't want to be too hard on Shubman. He's just about kind of coming, he and Gautam trying to find the partnership, see what works, what doesn't, nowhere like what it was when, kind of the Rohit, Virat, Ravi partnership had taken off. Because again, that was coming from a very different direction. So I would say let's be a little, kind of accommodating here in the sense that England हार जाते ना series of 5th day morning हार के आते तो I would have been on the same page as most other people. Managed to save it. I'm saying it. Lot of takeaways. Prasidh Krishna is a classic example. बेचारे ने इतना गाली खाया सीरीज के फर्स्ट टेस्ट के बाद. And I'm so happy for him the way he ended the test series. Some redemption of sorts, and it shows, it's a lesson that patience rakhna zaruri hai. We forget judging a player test match to test match. We have now come down to judging a player session to session. And I don't think it is fair, which is what Bharat Arun said actually on one of his podcasts with me very recently. Unfortunately. So, Sahil, so then will results speak for itself during the Asia Cup, or do you think that if they like Dwapan said, if they had lost in England, suppose if they lose during the Asia Cup, and we expect India to do well in the Asia Cup, the build-up has been so tepid. Do you think that if they lose, more changes will happen in the way they approach the next series or the next tour?
Well, I think in their heads they're very clear about the 2022 players they want to have in the mix for the T20 World Cup, because clearly your favorite festival isn't preceding the T20 World Cup. So you can't do much about the sample size of the T20 games you play before the next year's T20 World Cup. You only have so many games to play, so you can't really look beyond the 2022 or 25 you would have ideally shortlisted by now, which they have, considering the 20 which we saw when the squad was announced for the Asia Cup. So 15 plus 5 to me is sorted. नाउ एक दो चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंडीशन स्पेसिफिक, वेयर द वेन्यूज आर, जो इंडिया का लेग होने वाला है, उसके अंदर आप कहाँ खेल रहे हो, मे बी देन यू कुड प्रॉब्ली हैव सम कॉम्बिनेशन कॉल्स, बट more or less these are the bunch of players you will see. And as I said a couple of weeks back, the only thing which I see happening or could happen is the captaincy shake-up, and that's something which we will have to keep a very close eye on in the next T20 games, and how the Asia Cup unfolds for both Surya the captain and Surya the batter, because as a T20 international batter for India, the runs just haven't come in the last 15-17 games, or ever since he has taken over T20 captaincy. The saving grace was that IPL for MI, his best ever IPL, and after a long time you saw a MI batter getting consistent runs, so that helped him. वो But the pressure, the heat जर्सी will में be on. तो जर्सी में थोड़ा सा गोल्ड डाल दो, ठीक हो जाएगा. Dwapan, does the whole और thing, the एक build up? सॉरी Bolo. एक चीज मेरे को ऐड करना था, अभी वो कैसा मेंशन अबाउट द इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज. एक क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा, अगर कोई किसी को मिलता है ना, तो बस एक चीज पूछना, किसी ने भी आज तक बैंगलोर के टॉस का डिस्कशन नहीं करा. उसका मैं एक रेवोल्यूशन देता हूँ. आज बैंगलोर के अंदर द टीम वाज नेवर सपोज टू बैट फर्स्ट. इट वाज अ लास्ट मिनट कॉल which even shocked the dressing room why it happened. India were Somebody never should supposed ask. it was India were never supposed to bat first in Bangalore. Those 45 minutes जिसपे रोहित ने आके ऑप्टिक्स के लिए बोला चलो चलाओ तलवार, वो सब बहुत अच्छा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, यूट्यूब पे ट्रैफिक आता है, सब होता है. बट वो लार्जर क्वेश्चन वाज कि भाई बैटिंग किया क्यों, और वो डिसीजन किसका था बैटिंग करने का. वाज जीजी ऑन द सेम पेज? डिड द बॉलर्स नो? डिड द बैटर्स नो? नहीं मालूम था. सरप्राइज हुए So थे we, सारे. this question will be like the 1999 Ahmedabad Test match declaration. So this will forever be a mystery in Indian cricket. Uh, वी लोग कि शायद किसी किताब में टच होगा, जो किसी किताब में नहीं हुआ शायद इन किताब में हो जाए. हो जाएगा पर so Dwapan, does this smack of arrogance, overconfidence, the way India's approached this Asia Cup? What do you think? I will say quiet confidence, maybe, like which sometimes borders on overconfidence, but that is how Indian cricket is like that. Like when things start falling into place, then this sense of overconfidence comes to the fore, which is always there. But when defeats happen and all that, then suddenly there is a sense of decor, as I was saying before. But now that they have won, they have been winning. That what KSR was saying, that India did not win the series. It was not, it did not, for the fans it did not come across as that. It was for the fans it was about saving that fourth test match and winning that fifth test match and making the series 2-2, against backs against the wall kind of a situation. So India gets to corner all the glory. So overconfidence, you can say that overconfidence, but I don't know, like, see, the overconfidence for me is that there is a Duleep Trophy going on. You made so many rules about players. A South Zone team doesn't have Sai Sudarshan and Washington Sundar, and there is no explanation as to why they are not playing. It has been 1 month they have been off cricket. These are things that kind of baffles me. Like, other than traveling to Dubai, maybe in batches. That doesn't bother me much, because this is not, for me, this is not much of a tournament. Okay, because the opposition that you are playing against, it's very difficult to lose. They will have to play incredibly poorly to lose. So that's the thing. So, like it will come down to the final, of course, just one match, one shootout, one final, because India will obviously be among the top two in that four, in Super 4 stage. So it's a matter of one game, one final. But yes, but having said that, what you were saying before, that there will be a bit of, अगर हार गया ना, अगर एशिया कप फाइनल हार गया, तो बवाल मच जाएगा. देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ टॉक, लॉट ऑफ चैटर.
that वो होगा if at all the defeat happens, क्योंकि it is after all it's a game of T20, और अगर अफगानिस्तान को खेल रहे हो against those three spinners, you never know. Yeah, today Didi is the flavor of the show because everybody's talking about Didi on the chat window. Everybody. They're saying ask Didi more questions because he'll answer anything. He's a legend. But there is also talk about KSR as well because KSR is back. Somebody likened KSR to Bumrah because he's making a rare appearance on the show. So, so मतलब पता नहीं ये बुमराह को भी But नहीं I will, किसी no, को no, but I will deny it if anybody on the show says I was in bed rest. That's a very touchy topic. That's a very touchy topic. That's a very touchy topic. But you know, everybody more than this, everybody is more interested in going back in time because apart from all this, we also have a blast from the past where Mr. Irfan Pathan has. Oh, somebody's calling you Virat Kohli. Bumrah भी बोला रहा है, Virat Kohli भी बोला रहा है. No, हाँ but तो he's right here in एंड Mumbai. But एंड he's right गोल here तो in Mumbai. It's not in London. एंड गोल तो बुमराह का भी विराट कोहली बनना ही है ना भाई, हाँ, तो बात ठीक तो ही सही तो है. लिखा. बात तो सही है. बट केसर ये जो इरफान पठान has come out and spoken about the whole thing. So, I don't know it's an old clip, but it has come on the उसने back of क्या? his What was interview. the exact quote? He said that MS teams, those So players मैं were MS Dhoni's favorite, depending on who नहीं he did the didn't take hookah with him. he He didn't didn't take take MS him. Dhoni's name. He just said हाँ, मैं ऐसा नहीं करता था, मैं वैसा नहीं करता था, मैं हुक्का नहीं सेट करता था. तो he was like speaking in generic terms. But Yeah. वो हुक्का नहीं सेट करता था. MS धोनी वो मतलब 2+2 = 11 हो गया वो. No, And it's a Chandresh. 5-year-old comment. Yeah, so but uska continuation was because he was asked a question by Vikrant on what conversations you have had with MS with regards to your bowling. तो इरफान ने हाँ उस पे बोला कि मेरे को MS ने बोला था मेरा bowling तो ठीक है, but क्या पता हाँ मैं क्यों नहीं खेला. तो फिर उस पे he was asked again क्या लगता है क्यों नहीं खेला. उस पे इरफान हाँ बोला क्योंकि शायद मैं हुक्का कमरे में सेट नहीं करता था. तो clearly he was हाँ. mentioning Dhoni only there. कब नाम MS, भी कहीं use. नहीं that खेला, like which tournament did he not play where he is questioning? I think he's mentioning the 2011 World Cup maybe 20 2011 2000. World Cup, before going to the World Cup, that six that Dhoni hit, which went out हाँ, of Dharamshala, ऐसे वाला, ये does वाला, ये वाला. Irfan remember that? Yeah. Uh, और उसके बाद I think he also mentioned about, and that तो happened. I remember clearly there was this IPL season where Irfan Pathan did not play a single game for CSK. पूरा season I Yeah, think yeah. bench पे बिठा के रखा I था think I think धोनी it ने. was 2015. 15 or 2015 he didn't play 16? 15 or 16? 15. तब 15 I think. तब Twitter wasn't a thing, so I used to read tweets back then that he's the most expensive water boy ever. 1.5 crore something उसका bid weight कुछ था और उसको पूरा season bench पे बिठा के रखा था. He's saying 2008 Australia VB series. CB series. हाँ सॉरी CB सीरीज. हाँ. ऑस्ट्रेलिया सुनते ही VB माइंड में आ जाता है ना एकदम. Corrupted mind. Anyways, so Kesar, what do you think? Matlab, as in like, and Irfan tweeted. To be fair to him, he tweeted yesterday. Old clip being brought back. PR war, क्या fan lobby or something like that. Something to that भाई effect. तुम जाके see, listen, तुम जाके एक पॉडकास्ट में बैठते हो, तुमको जो बोलना है तुम बोलते हो, अपने तरफ से तुम अपना जो जस्टिफिकेशन देते हो, तुम्हारा कमेंट्री का जो हुआ, तुमको क्या हुआ, व्हाई डिड यू लूज योर कमेंट्री जॉब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पीआर नहीं है. कोई और कुछ करेगा तो वो पीआर है. तुम अपने लिए एक पॉडकास्टर को ढूंढ रहे हो. मैं आई हैव अ वेरी सिंपल, आई जस्ट टेक 2 minutes एंड एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, नोबडी इज अ सेंट. नोबडी इज अ सेंट. कोई मतलब भाई ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही साफ हूं और सामने वाला बिल्कुल ही गलत है. ये एक प्रोफेशनल वर्ल्ड है. यहाँ पे कंपटीशन है. यहाँ पे एक की दूसरे की लोगों की आपस में पड़ती नहीं है और इसमें कोई नई बात नहीं है. द क्वेश्चन सिर्फ इसमें एक ही है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो टू ड्राइव योर पुश योर पॉइंट फॉरवर्ड. नाउ इन द केस ऑफ इरफान पठान, व्हाट एग्जैक्टली, वो जिसको भी ब्लेम कर रहा हूं, उसका सर्किट में
there is a history. There is a history of not getting along with a certain set of players. Okay, that not getting along led to a turf war in his backyard. I don't know whether I need to go into all these details. It led to a backyard turf war with a certain set of players back in Baroda. Okay, झगड़े हो तुम, आ जाओ, मैं इतना, अगर तुम्हारे पास आंसर करने का, तुमको बात करने का इतना शौक है, मेरे पॉडकास्ट में आ जाओ, आधा घंटा बात कर लेते हैं, मैं 5 सवाल तुमको पूछ लूंगा, आ जाओ, बैठ जाओ। तुम क्या इधर उधर, वो बेचारे जिनके पास तुम जाते हो उनको क्रिकेट का सीन ही पता है, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि मार्केट में फील्ड पे होता क्या है। तुम स्क्रिप्ट लिख के देते हो, तुम बोलते हो मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आऊंगा, ये 5 सवाल है, ये मेरे से पूछ लेना तुम। वो एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है, उसने ललित मोदी को लेके आया अपने शो पे। वो ललित मोदी उसकी शो पे बोल रहा है कि there is no allegation against me, there is no allegation against me। भाई वो कागज ये मेरे बाजू में कबर्ड है, अंदर मेरे पास रखे हुए कागज, पूरी एलिगेशन मैं पढ़ के सुना दूं। तो एंड देन वो पॉडकास्टर इज मार्केटिंग हिमसेल्फ सेइंग I have gone where no other journalist has gone। नहीं बाबा, you are right, actually you have actually gone where no other, because no other journalist has been bullshitting to this extent, I'm sorry to say। तो ये पॉडकास्ट का जो धंधा बन गया है ना, आप बेसिकली आप अपना डर्टी लॉन्ड्री लेके जा रहे हो, डर्टी लॉन्ड्री ले जाके वहां पे धो रहे हो, आप उनको बोल रहे हो मेरे से ये सवाल पूछना, मैं इसके तुमको जवाब दूंगा। मेरे को तो अभी तो एक क्रिकेटर, इंडिया क्रिकेटर है, उसको अभी अभी लास्ट मंथ की बात बता रहा हूँ मैं, ही वाज ऑफर्ड 25 लाख रुपीज टू कम ऑन अ पॉडकास्ट। क्या है, उसने मना कर दिया, बोला नहीं। खैर उस क्रिकेटर के लिए उस क्रिकेटर के लिए 25 लाख बहुत कम है एक्चुअली, वो शायद 2.5 करोड़ बोलता। हाँ एक्चुअली 25 लाख उसको कुछ नहीं है, उसको शायद 2.5 करोड़ बोलता तो शायद आ भी जाता हूँ। So podcast has become a laundry। Just go there, wash your dirty linen। तुमको जो बोलना है बोलो, it's one sided है। 4 लोग तुमसे सवाल पूछने के लिए तो खड़े नहीं है, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है उसको आइडिया ही नहीं है कि क्रिकेट सर्किट पे होता क्या है, उसको मालूम ही नहीं है कि भाई, उसको अगर मैं 4 सवाल आड़े टेढ़े पूछ लूंगा ना कि अच्छा बताइए इरफान पठान ने रणजी ट्रॉफी कहाँ से खेला, कौन से जोन से डुलीप ट्रॉफी खेला, या भाई जो भी उसका क्या स्कर्मिशेस थे, उसको कुछ आइडिया नहीं रहेगा। वहां आके वो बोल रहा है कमेंट्री में मेरे साथ ये होगा, इधर मेरे साथ वो होगा। अरे and I'd like to say, I'm not saying that it applies in the case of Irfan, but in many ways a professional space is a dog eat dog world। Okay, it's a bad world। Anybody who operates in a professional space where stakes are high knows that it's a bad world, it's an ugly world out there। Okay, तो जब तक मेरी चल रही है मैं चलाऊंगा, जब तक थिंग्स आर गोइंग इन माय फेवर, मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ूंगा, और जिस दिन मैं हार गया उस दिन बाकी बोलूंगा नहीं नहीं, है तो अनफेयर है यार, ये गलत खेलते हैं, वो नहीं हो सकता। या तो तू डे 1 से गेम से बाहर हट जा, बोल मैं ये गंदगी करूंगा ही नहीं, मेरे को अपना चुपचाप काम करना है, घर जाना है, चुपचाप वो गेम खेल, घर जा। या तो तू फिर लड़ाई लड़नी है तो पूरी लड़ ले, आखिरी तक लड़ ले, ये बीच में रोके फिर भाग मत। चिट भी मेरा, पट भी मेरा, कॉइन भी मेरा, टॉस भी मेरा, मैच भी मेरा, नहीं चलता है ना। या तो लड़ाई कर ले या तो लड़ाई मत कर, एज सिंपल एज दैट। और लड़ाई हुई है, 100% लड़ाई हुई है। कितने सालों से लड़ाई हुई है, ये कल की लड़ाई नहीं है, ये पिछले 7-8 सालों की लड़ाई है। तो क्या बोलना चाहिए, 100 लोहार का एक सोनार, 100 सोनार का एक लोहार का बोलते हैं ना, that's the kind of thing। I mean, it plays out, man। That's what happened। So and now after MS Dhoni is retired, जब MS Dhoni था तब बोल देना था ना कि अरे मीडिया सुन लो, मैं इसका हुक्का नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कल के मैच में वो खिलाने नहीं वाला है, तब बोल देना था। अभी क्या बोल रहे हो 10 साल बाद? Srini, that's what somebody said। So in a way, has Irfan doubted his own brother's selection in the 2011 World Cup? That's a very fair point। Maybe brother said the hookah then। That's what I'm saying। So you're sort of doubting your own this is brother। what I'm saying ना, this is what I'm saying। कोई लॉजिक ही नहीं है ये सब बातों में। बट आप भी जाते हो, आप भी वही खेल खेल रहे हो, किसी पॉडकास्टर को पकड़ लिया, तमाशा बना दिया। अनफॉर्चुनेट है ये। Dwepan, in the same vein, KSR spoke about podcasts and everything. Robin Uthappa said something about Virat Kohli, but I believe Robin has now come out and said I should have probably spoken to Virat directly about Ambati Rayudu's non-selection for the 2019 World Cup instead of going
on some podcast and saying that Ambati was unfairly treated and he was disappointed and this and that. उनको तो कपड़ा भी पहुंच गया था and all these things. And now he's regretting because I believe that Virat has got angry with him and he has shut all communication with Robin. So अब पछताए होत क्या जब चिढ़ गया चुक गई खेत. हाँ अभी like that is what it is, no? Like when like look at Irfan, like what is Irfan trying to do? Like Irfan, if you remember that interview Irfan did of Rohit Sharma when he was not playing that fifth test match, वो उसका पाव पड़ना बाकी था. The way he was behaving, way he was talking, as if जर्नलिस्ट रोहित वहां पे बोल रहा है कोई ऊपर बैठ के लैपटॉप लेके बैठ के मेरा करियर खत्म नहीं कर सकता है. एंड इरफान इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फॉल ऑन हिज फीट एंड लाइक सो उसके बाद व्हेन ही लॉस्ट दैट contract, I think he lost one contract, no, BCCI contract or something, IPL contract or something like हाँ. And उसके बाद he suddenly became a revolutionary. उसने देखा कि उसका वो जो एक चैनल बनाया उसमें व्यूज अच्छा आ रहा है, ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर एटसेट्रा, एंड देन सडनली ही अंडरस्टूड दैट दिस saying the other thing, the other side of the story becomes is also good business. So like कुछ उल्टा बोलूंगा तो वहां पे भी थोड़ा बिजनेस है, तो वही वो कर रहा है. that is all that he is doing. That is Robin Uthappa का I don't know, like Robin Uthappa, like if he had said what he said about Ambati Rayudu, that was the right thing to say. Ambati Rayudu should have been there in that team. Like there was no reason as to why he was not there. But then backtracking because then his commercial interests could suffer. So it is all about commercial interests. Everyone sees where is the money and they behave accordingly. यहाँ पे कोई कुछ revolution लाने वाला नहीं है. Let's make it Chandresh, your birthday friend will know everything why this Baroda turf war started. ये ऐसा क्रिप्टिक बातें नहीं. You have to be direct. You have to call it out. No, ये ऐसे नहीं चलेगा. You have to follow me on my social media to know what he's talking about. Okay. But in the meantime, फिर एक बार सुपर चैट आया. शुभम गर्ग ने 40 रुपए का सुपर चैट. He's saying Sahil Bhai, do a story on favorite hookah flavor of Thala. Mint. ये मैंने नहीं बोला था, जॉर्ज बेली ने बोला था. If you remember George Bailey mentioning about MS Dhoni's open door policy and his room always smelling of the mint flavor of hookah. These are not my words, these are George Bailey's words. Or George Bailey made that revelation that he likes a tinge of mint with probably pan, mint, Dubai mint, whatever the flavors are. Not endorsing smoking and hookah at all, but yes. By the way, he's busy playing golf in the States. You see, he's played golf with Donald Trump as well in the past. So anything can happen with Thala. और वो आपने मेरे को पूछा नहीं, मैं वो डिसअपॉइंटेड हूँ. आपने इरफान पठान पे मेरे से ओपिनियन नहीं लिया, मैं खुद देता हूं. नहीं, आप बोलना शुरू कर दिया था, इसके लिए मैंने बोला नहीं. तो मैं वो पूरा चैट सुना, क्योंकि मेरा भी फेवरेट पास टाइम बन गया जब से दिल्ली में द रेन्स हैव इंटेंसिफाइड. सो इट टेक्स मी 3 hours आना जाना ऑफिस से. सो एवरी डे वन पार्ट ऑफ अ पॉडकास्ट इज हर्ड. सो मैंने वो इरफान पठान वाला 2 part में सुना बिकॉज इट वाज वेरी लॉन्ग. So I heard. Irfan is saying that Irfan is saying, and he's very boasty about the fact कि सिर्फ 7 गेम में मैंने उसको क्रिटिसाइज करा. उसको नहीं, हार्दिक पांड्या को. सिर्फ 7 गेम में. उसने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूँ. 7 गेम में क्रिटिसाइज करा. 14 गेम्स होते हैं. So I was lenient. Can someone ask Irfan Pathan that he was asked to interview Hardik Pandya after one of the games MI won and he refused to interview? वो इंटरव्यू करने नहीं गए थे वहां पे. सो ये सारी चीजें, मतलब एग्जैक्टली देयर कांट बी वन वे ट्रैफिक अबाउट ऑल दी सुपरस्टार्स एंड प्लेयर्स. एंड दैट टर्फ वॉर एक्चुअली स्टार्टेड व्हेन यूसुफ पठान वाज आउट ऑफ करेंसी इन डोमेस्टिक सर्किट. द पॉडकास्टर शुड आस्क दीपक हुडा बड़ौदा छोड़ के क्यों गया. हाँ, उसके पीछे क्या चल रहा है. और अभी दीपक हुडा जब बड़ौदा के लिए था, मुश्ताक अली में गया था, चेन्नई में मुश्ताक अली था, छोड़ दिया था, झगड़ा हुआ था, मुश्ताक अली छोड़ के घर चला गया था. क्यों गया, किसने तेरे को बैक किया. अभी ये पॉडकास्टर जो है, जो उससे पूछ रहा है कमेंट्री के बारे में, उसको बेचारे को गिवन डे उसको ये नहीं पता वो मुश्ताक अली होता क्या है, यू नो.
तो अनफॉर्चुनेट है। अब ये चुनते भी तो वैसे है ना, ये चुनते भी तो वैसे वाले पॉडकास्टर है कि जहाँ पे जाके ऐसा लंबा पत्थर फेंको कि किसी को दिखे ही ना मैंने क्या, मतलब क्या है नहीं, ये। बट ये श्रेणी ये ऐसे ही है ना कि मतलब these podcasters and all these people will also look at scorecards. अभी जैसे दुलीप ट्रॉफी चल रहा है, Yeah. क्विकली pivoting towards the next topic about दुलीप ट्रॉफी। आज दुलीप ट्रॉफी शुरू हुआ सेमीफाइनल, वो ऑन द फेस ऑफ इट तो वो लगेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने तो तोड़ दिया। 184 कुछ बनाया, फोड़ दिया, ये वो सब। बट एक्चुअल में जो गया रिपोर्टर वहां पे टीओआई का, बाय द वे देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द चैट विंडो दैट केएसआर प्लीज सेंड डीडी टू एशिया कप बिकॉज ही विल आस्क टफ क्वेश्चंस टू ऑल द टीम्स इन दैट एशिया कप। सो दैट्स अ रिक्वेस्ट दैट हैज कम फ्रॉम अरविंद दात्रेयास। बट सो दुलीप ट्रॉफी में देखा ना, मतलब एज इन लाइक पीपल लुक एट स्कोर कार्ड्स एंड फॉर्म ओपिनियंस, इट्स वेरी इजी। Yeah. और पिछले हफ्ते तो इट वुड हैव बीन मच इजियर इफ यू लुक्ड एट नॉर्थ ईस्ट जोन प्लेइंग। Yeah. वो तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जोन का तो टीम दिलीप ट्रॉफी में होना ही नहीं चाहिए। वो तो आई डोंट नो, वो अगर आप ये इतनी चीजें अंडू कर रहे हो लोधा कमेटी की और लोधा पैनल की, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वाला मैच सॉर्ट करो, ये हटाओ दिलीप ट्रॉफी से नॉर्थ ईस्ट जोन। व्हाट स्टैट लोधा पैकेज यू आर कमेटी डूइंग? का लोधा कमेटी का जो रिकमेंडेशंस था ना, ओके, जो सुप्रीम कोर्ट का, वो शॉपर स्टॉप का डिस्काउंट कूपन होता है ना, वो था। वो बेसिकली लोधा कमेटी ने इंडियन क्रिकेट में शॉपर स्टॉप का डिस्काउंट कूपन छोड़ के गया। वो जब इनको चाहिए रहता है तब यूज करते हैं वो, जब इनको जरूरत नहीं रहता है वो बैग में रख देते हैं। जब जरूरत रहता है इनको, जब जरूरत रहता है, देखो कूलिंग ऑफ इसको तो लागू होता है, फिर जिस दिन इनको जरूरत नहीं होता है ना, उस दिन कूलिंग ऑफ नाम की तो चीज ही होनी नहीं चाहिए। ऐसे कूलिंग ऑफ तो बेकार है, कूलिंग ऑफ तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक ही नहीं है। जिस दिन इनको जरूरत होती है, ये देखो ये वाला नॉर्थ ईस्ट में तो क्रिकेट बर्बाद है, क्यों गए हम लोग, जिस दिन इनको जरूरत होती है, अरे नॉर्थ ईस्ट ही तो रीजन है जहां हमको डेवलप करना है क्रिकेट। तो लोधा कमेटी रिकमेंडेशंस हैव बिकम शॉपर स्टॉप डिस्काउंट कूपन्स। So if Shopper Stop is listening to us, No, we are and open I have for. I have a question for the three of you. Now that we discussed cooling off and everything, why doesn't cooling off apply to Mr. Rajiv Shukla? Can any one of you explain? Because आप लोग ने बहुत ही इज ज़्यादा सो कूल, दैट्स बीस व्हाई Yeah, ही इज वेरी कूल। मतलब मतलब 2025 में भी इतना रेलेवेंस है कि राजीव शुक्ला का नाम आज भी बीसीसीआई प्रेसिडेंसी के लिए लिया जा रहा भाई है। ऐसा क्या देखो, है, ऐसा क्या है? आई मीन maybe because he has the world's best fast bowler with him. समझाओ थोड़ा, समझा नहीं मैं। वर्ल्ड फास्ट बॉलर ये भाई ये बाउंसर था। नहीं ये नहीं, मतलब मेरे you को know समझ गया। मैं समझ गया। Dwaipan, मैंने I know. I also understood what you meant. Yeah. but Dwaipan, और why don't अभी you answer? अभी नो अभी हाँ? चंद्रेश, अभी अभी द्वाइपन से पूछा ना, वो किसी ने बोला कि द्वाइपन विल आस्क टफ क्वेश्चंस, तो मैं अभी परसों व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट होल फिटनेस स्टोरी ना, 2-3 दिन तो मैं पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहा था, और ऐसे ही मैंने फन टाइम में फ्योरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ्योरी क्वेश्चंस, उसमें डीडी के क्वेश्चन वन आफ्टर द अनदर आई जा रहे थे यार। मतलब सिर्फ द्वाइपन का आवाज आ रहा था, कभी कोहली गुस्सा हो रहा है, कभी शास्त्री गुस्सा हो रहा है। इट इज ऑल डीडी। 2024 वर्ल्ड कप का मैं कहीं पे कुछ सुन रहा था, वहां पे रोहित शर्मा भी बोल दिया है, क्या बोले आप, क्या बोले आप? मैंने कहा, ये तो कुछ कुछ चटकारा दे देते हैं। यार मेरे को ना बस हेडलाइन से my only interest is headline, so I try to ask headline worthy questions. अभी वो अगर और मेरे नहीं, कुछ अगर इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, अगर if DD would not have asked, Rohit Sharma would never have announced T20 retirement. Yeah, Exactly. वो बोलेगा तो मुझे अगले किसी दिन ने पूछा नहीं तो मैंने The बताया नहीं। most obvious question that needs to be asked, no one is asking. वो फलाना पूछते ही जा रहा है, रिलीज पॉइंट और वो ये ज्ञान वो ज्ञान। और उसके या अंदर बर्थडे पे विश करने बोलता है। उस पे गौरव गुप्ता ने शुभमन गिल को फंसा दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में। हाँ, शुभमन गिल बेचारा अच्छा खासा 15 मिनट का पीसी दे के जा रहा, जीजी ने हाथ उठाया, जीजी को सवाल दे दिया गया, जीजी पूछ लिए रोहित शर्मा का क्या होने वाला है। उस पे शुभमन गिल फ्लो में बोल पड़ा, मे बी ही विल टेक द कॉल आफ्टर द फाइनल। देन शुभमन हैड टू कम बैक कि नहीं, आई डिड नॉट मीन दैट। तो ये प्लेयर भी फंस जाते हैं। Yeah, you wanted to say एक्चुअली something. शुक्ला जी की बात निकली तो मेरे को एक किस्सा याद आता है। द लेजेंड दैट ही इज। मैं तो दूर से ही प्रणाम करता हूँ, कभी इतने पास से तो जाके सर
वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, तभी वो आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होते थे। तो वो स्टेज पे बैठे थे और मीडिया क्वेश्चन मांग रही थी, कुछ पूछे। तो वो याद है एक बार आईपीएल में रिवर्स बिडिंग हुआ था। 2016 में दो टीम को 2-2 साल के लिए ले आए थे ना, हाँ 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 गुजरात में और हाँ चेन्नई में, हाँ, तो पुणे में। तो वो 2 साल के लिए मुझे तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो मीडिया में किसी ने पूछा कुछ सवाल, तो उन्होंने जवाब देना शुरू किया। तो एक आईपीएल एग्जीक्यूटिव दौड़ के शुक्ला जी के पास गया, उनको बताने के लिए कि शुक्ला जी ये ऐसे नहीं है, ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है, जो आप बता रहे हो ना ये एक्चुअली हाँ गलत है, इसका एग्जैक्टली उल्टा जो है वो होने वाला है। वो हाँ जब तक वहां से वो एग्जीक्यूटिव वापस चल के अपनी कुर्सी पे आके बैठा, शुक्ला जी ने जो 5 मिनट पहले तक जो रट्टा मार के आए थे, उन्होंने फिर वापस वो पूरा, तो वो एग्जीक्यूटिव मेरे बाजू ही बैठा था। मैंने कहा फिर जाके बोल, नहीं छोड़ जाते थे, कोई फायदा नहीं है। तो ये लेजेंड है। अभी क्या ही बताऊं मैं, प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो, मतलब नहीं बिटवीन बट हिम रॉजर बिनी एंड सौरव गांगुली, यू हैव एटलीस्ट व्हाट 520 इंटरनेशनल मैचेस बॉस। but there is a story today, Dwaipan. I don't know if you read that some former player who has record-breaking achievements in cricket is likely to become the BCCI president. So, any idea No, who that that शुक्ला is? जी, no अरे no शुक्ला जी ही for होंगे। उनसे बड़े रिकॉर्ड किसी के पास है नहीं क्रिकेट में। नहीं, सौरव गांगुली खिला रहा है in his own quarters No, के no, so that if it report, is a cricketer then he Yeah. only has the credentials के क्या 2 AGM attend करना है and a player of like super repute, so he only has the credentials. So if that is the suggestion, then the suggestion जो आ रहा है that is Ganguly because he is trying to put forward his name, the, और मेरे को the लगता नहीं story, है yeah, the Yeah. story, that big हाँ. cricketer, नहीं वो that big cricketer वाला story is Sachin Tendulkar। Oh. कॉल गया, Ma- कॉल आया था कि पूछने के लिए भी कि सचिन इंटरेस्ट दे रहा है। So, but नहीं, कौन Dwaipan is सी saying that जिंदगी। Saurav is telling in his नहीं, Saurav quarters that Saurav it is is saying me. हाँ, is Saurav is Saurav telling in is his telling quarters because is Saurav posting is that it becoming the CAB president again. yeah, He is yeah, Saurav becoming is retiring as CAB president, but not uh, BCCI. So that but BCCI thing but he is was about Tendulkar। see but in his अभी के लिए only अभी का जो वो भी rules है कि वो 2 AGMs है, so जापान जापान तुम समझो उस वो स्टोरी, वो बिग क्रिकेटर दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद टेंडुलकर। वो स्टोरी पूरी पढ़ो तुम, उसमें है अच्छा मैंने पढ़ा कि नहीं एक है। बिग क्रिकेटर, एक बिग क्रिकेटर को ऑफर किया गया है। बिग क्रिकेटर सोचे हैं इसके बारे में, अगर बिग क्रिकेटर नहीं मानते हैं तो फिर टेम्परेरी किसी और को लेना पड़ेगा, चाहे शुक्ला जी जैसे। दैट इज द स्टोरी। अच्छा has it been said offer किया गया है, like I don't know like नहीं, yeah. it is all in the air, nothing, and हाँ. I mean, I can tell you, this man will never even go close to. I mean, So he has other priorities. so yeah, so it's अगर it's वो गया तो interesting. ODI cricket will be 25 overs. याद रखो। But Dwaipan, you spoke about Saurav. Why can't it be Anil Kumble? He also attended 2 AGM as KSCA president. has he attended yeah, that is exactly the question that I asked Yeah, the one who told me that why not Anil Kumble, Azharuddin, why not two Azharuddin AGMs also, as HCA president. More than two but AGMs. but Azharuddin is has fought elections for Trinamool like he is a known opposition face, not like he's not in Yeah. the you mean to say Anil Kumble is a BJP face? Is that what you're saying? he is a neutral face at least. Oh, okay. And what is He knows Rajiv some. Shukla then? Now that we're discussing parties, then why not why Exactly, Rajiv? that is my first point as to like having all said Actually, and देखो done. तो यहाँ पे भी there is, He, there, he is a यहाँ पे भी Congress सीक्रेट सॉस है। यहाँ पे वो कांग्रेस में है लेकिन है बीजेपी का। वो जैसे सुपरमैन और क्लार्क केंट है ना, तो वो जो क्लार्क केंट जब है तो वो कांग्रेस है, लेकिन जैसे ही सुपरमैन बनते हैं तो फिर बीजेपी बन जाती है। but the way it is when it comes to this this thing, so I do not think at the end of the day a congressman at the end of the day
Rajiv Shukla is a congressman, so will he be made the president? Normally, hota nahi hai. Like normally, huh? But hoga. You think so? शुक्ला जी कुछ भी कर सकते हैं, like, तो इस जब बीच नाम और एक करते सुपर हैं वो। और एक सुपर चैट आया है, स्टीव शर्मा 40 रुपीज का सुपर चैट, थैंक्स अ लॉट स्टीव। वो कह रहे हैं ये दल्लन टॉप की बात हो रही है क्या? हमने किसी टॉप की बात नहीं करा भाई, हम तो इरफान पठान की बात कर रहे थे बस। अच्छा, बस आप पॉडकास्ट जनरली बात कर रहे हो, मतलब वाइब्स की बात कर रहे हैं तो चलो थोड़ा क्रिकेट डिस्कस कर लेते हैं। Actually, let's go back to हाँ, अच्छा, quickly let me take some subscriber questions. Bhavik Aswani is saying, update on Virat Kohli. Was his fitness test really conducted in London? As I do not believe the journalist who reported this news, as he always writes against Virat. Dwepan, Sahil, KSR, what is It the has update? been, I, it has been, it has been conducted. It has been conducted. A mail has been shown that where these fitness tests have been conducted, and by beside his name, it was there that Virat no, but Kohli I have a test question. conducted in I have a, England. I have a question. Who conducted? He might have sent the videos also, like that is there, and otherwise we say might have sent somebody. That is another matter, but his fitness tests have been conducted in England. That is No, the but only. that's the question. Then I think we should, if that is the case, then the story should also come in terms of how it was conducted. Like, I'm Could not be, saying yeah. गलत तरीके से, yeah, I'm curious. I'm curious कि आप कोई बंदा लंदन में बैठ के फिटनेस टेस्ट दे रहा है, अब उसने वो क्या बोलते हैं उसको जो हाथ में पहनते हैं, वूप बैंड, वूप बैंड। हुप बैंड। अब उसने वो हुप बैंड कोई घोड़े को ही पहना दिया होगा, किसको पता? Maybe, we नहीं don't पता know. ना, Maybe मैं Adrian बोल Levy रहा हूँ। has somebody in London. I don't Come know. on, man. I'm not. I mean, I love Virat and everything. And Virat is at the pinnacle of his fitness. वो उसको फिटनेस टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। जिसको फिटनेस टेस्ट देना है उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे। जिसको एक्चुअली फिटनेस टेस्ट देना है और जिसको योयो टेस्ट पास करना है वो तो पास कर नहीं पा रहा है। तो विराट में मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वो आंख में आधी नींद में वो अपना योयो टेस्ट क्लियर कर लेगा। That's not the point. The point is the it's an operational aspect. You're putting a policy in place. If you are saying that a cricketer can undergo fitness test not even when he is not available in the country, that is the curious part. I don't know. It's very intriguing to think that you can sit in any corner of the world and go and do your fitness test. I don't understand. There has to be certain benchmarks set. आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हो आपका, जहाँ पे आप इंडिया क्रिकेटर की बात कर रहे हो, वो बंदा रैंडमली कैसे अपने बैकयार्ड में फिटनेस टेस्ट दे देगा? It doesn't make sense, is what I'm saying. I'm sure the reporter knows something which maybe I don't know. I'm okay with that, but it doesn't make sense. If you think about it. क्या लग रहा है द्वैपन, what do you think? No, I think he has given the test. That's what I have Fair heard. enough. Okay, that Okay. he has appeared for the test. Okay, fine. Let's go to the next question here from the subscriber. Is this the first time Indian team will be going to any tournament without a shirt sponsor? 2002 Champions Trophy, there was big tamasha, but that time we didn't have shirt sponsor. But this time they have at least one kit sponsor. Uh, uh, when is By it likely Monday to the come? shirts will be printed. By Monday shirts will be printed. Acha, हो जाएगा, okay. right? By Uh, हो गया, decision हो गया है on the chess sponsor and all. It's okay. Okay. Dwaipan, next question for you. Does this old Irfan clip from Sports Fan reflect genuine tension from Dhoni's era regarding off field dynamics, or is it unfair media engineering aimed at media driven clickbait narratives? See, differences are always there in a cricket team. It is not that there are no differences in a cricket team. Now, when a team is performing well, then those differences do not come to the surface. And the regime that we are talking about between 2008 to 11, everything anti-Dhoni used to get suppressed. Those things are there. There could even a selector could not say a word against Dhoni. Mohinder Amarnath lost his job because
he wanted Dhoni removed. So that's how it was. Having said that, like Dhoni, for whatever it is, but Dhoni will never drop a cricketer if he thinks that that player fits into his scheme of things who can win him games. He will never do that. He will do that when he thinks that this guy cannot do it, because this same Irfan Pathan got games in that VB series in Australia. He was Dhoni's go to man in the 2007 T20 World Cup. So इरफान हैज गॉट इनफ एंड मोर गेम्स अंडर धोनी. ये नहीं है कि धोनी ने उसको गेम्स दिया नहीं है. If they may not be great friends, that is that can be true. And there will always be differences in team, as was the case in that team also. But bringing it up now is obviously for TRP, for mileage, those things. Like now you are being asked, and when you say that after 3-4 days we are also discussing it, so that is the idea. It's business, like when you bring those things up. Question for you, Sahil. Arvind Atreya says, everyone has two faces, even Dhoni has. To grow, you need. And he also says, mid players say everything, say several things to stay relevant and earn money. That's what Dwaipan also hinted at. They can, and a lot of things, as I said, as Dwaipan Bhai also mentioned, no one needs to be a good friend or the best of the buddies to enjoy a meal together. Cricket के अंदर तो differences रहता है, and that's what makes this team sport very unique, because you are different. आप सब मतलब सब धोनी रायना जैसा बॉन्डिंग नहीं रहता कि एक का रिटायरमेंट देख के दूसरा रिटायर हो जाता है, ऐसे नहीं होता. और And Dhoni इरफान, Raina who knows? also, Sahil did not remain friends after the 2020 IPL, if you remember. 29, Yeah. yeah. Yes, I've heard that story, and Srini still Yeah. laughs. Srini has a big smile on his face for the obvious reason. So, Yeah. मतलब वो है, देखो डायनामिक्स चेंज होते हैं. Chinnathala is actually the Thala. अभी सबसे क्लासिक एग्जांपल रोहित विराट का ही है ना. अभी ऑल ऑफ अ सडन रो एंड को हैव बिकम रोको. इतना कन्वीनियंट मैरिज हो गया दो ऐसे क्रिकेटर्स का हु वर ऑलवेज काइंड ऑफ पिटेड अगेंस्ट ईच अदर. चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ कैप्टेंसी को लेके बहुत सारी चीज हुई. ये कन्वीनियंस के ऊपर चलते हैं सारे नैरेटिव्स और ये सारी फ्रेंडशिप्स एंड एवरीथिंग. एवरीवन इज लुकिंग ओवर देयर शोल्डर फॉर देमसेल्फ ओनली. कोई किसी के लिए किसी की प्लेट में आके दाल रोटी नहीं डालने वाला. इरफान हो, धोनी हो, विराट हो, रोहित हो, सबको अपना घर खुद चलाना है. एंड दे आर एवरीवन इज रेडी टू गो द डिस्टेंस टू मेक दैट हैपन. सो वो तो है. Absolutely. Srini, question, Prasanjit Jana has Sky का मेन प्रॉब्लम है मिनो टीम को बैश कर देता है लाइक हांगकांग यूएई, लेकिन पाकिस्तान एंड टफ अपोजिशन के खिलाफ नहीं चलता. उसका स्ट्राइक रेट भी पहले से कम हुआ है. Well, is India, whenever he is, that's why I said ना, वो इंडिया का जो ब्लू है उसमें अगर सूर्या की तरफ से परफॉर्मेंस चाहिए तो वो ब्लू में थोड़ा सा गोल्ड डालना पड़ेगा. बिना उसके तो नहीं हो रहा है वो, क्योंकि वो उसका इंडियन नंबर्स आर एग्जैक्टली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट ही हैज मैनेज्ड टू अचीव एट मुंबई इंडियंस. बट हैविंग सेड दैट, देखो, देयर शुड नॉट, यू कैन नॉट इग्नोर स्काई फॉर द जायंट दैट ही इज इन दिस फॉर्मेट, राइट. T20 रन बन रहे हैं उसके. अब ठीक है, कोई बायलैटरल में नहीं बने होंगे वगैरह, बात अलग है. बट आप जो आईपीएल आपका बेसिस है ना सिलेक्शन करने का, प्लेयर को सेलेक्ट करने का बेसिस क्या है? आईपीएल ही है ना. तो आईपीएल में उससे बड़ा बैट्समैन आज है नहीं, आज की तारीख में. तो आप उसको कैसे इग्नोर कर लोगे? तो बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए. हालांकि बात ये भी है कि यस, उसके इंडिया नंबर्स डोंट रियली एड अप, डोंट रियली मैच अप. दैट इज समथिंग एट अ पर्सनल लेवल स्काई हैज टू एड्रेस. एंड मैं उल्टा उसमें एक ऐड भी कर दूंगा कि if I were to look at it from Sky's perspective, this tournament actually will be a great indicator if he actually has the ability to captain India next year in the 2026 T20 World Cup. This tournament actually can potentially be a big filter to judge Surya. Listen, last year जो उसको जो T20 कैप्टेंसी मिली थी वो मोटा इस दौर पे मिला था कि वो थोड़ा बहुत टीम सेटल नहीं हुआ था, राइट. एंड हार्दिक एक फॉर्मेट के लिए अवेलेबल था नहीं. अजीत अगरकर को लगा कि चलो सूर्या को कैप्टन बना के ले जाना चाहिए. वो उसकी झोली में आके गिरा, फाइन.
this Asia Cup is actually the first big tournament where he's going to be judged, Hmm. as a leader of the pack. So, यहाँ पे, you can actually draw some essence, and it will play a big role in determining whether he is indeed the guy who can lead India in 2026. और वो शुभमन को वाइस कैप्टन बना के वो बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट ही तो डाल दिया है ना भाई, और क्या है, स्टेटमेंट ही है वो कि देखो भाई हमारा इंटरेस्ट है इसमें, इसको पुश करने में इनटू लीडरशिप रोल, बट आप हो इस फॉर्मेट में, आप जो हो इसको ध्यान में रख के हम आपको कैप्टेंसी वापस दे रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू जज यू. दैट इज द होल स्टेटमेंट. Dwaipan, Kiran Kumar Sports says, I am no more interested in Asia Cup. It's just like practice matches before World Cup. It's almost confirmed Asia Cup win by India. I've never seen so much confidence in an Indian team ever. Before I go into this, I will just clarify this thing about Surya Kumar Yadav. 83 matches, 2598 runs, 38.20 average in T20s, 167 strike rate, 400s. If this is not performance, I don't know what is. Like what the viewer was saying that he scores runs against minnows, I don't know. In T20 cricket, in a 5-match, 6-match series, a number 4 batter or a number 5 batter will come good twice. That is all you need. You will not come good every time. A man with a T20 average of 38.20 and a strike rate of 167 over 83 matches is a success in T20 cricket. Is a super success in T20 cricket. First things first. Yeah. And then another thing is India. I kind of agree with this point that this Asia Cup is kind of it is just lead up to the T20 World Cup. It is a case of a few practice matches, and there is no way India is not going to play the final. It is almost, I have been watching this Pakistan versus Afghanistan, etc., etc. These games, a bit of Bangladesh also I have been watching. So I have Anti-national. seen. So I have a fair idea of what we will be up against and what kind of team that we have. So it will boil down to अगर final हार गया तो we will talk a bit about the defeat. There will be थोड़ा बवाल मचेगा, थोड़ा ये बात होगा अगर हार गया तो, but मुझे लगता नहीं है हारेगा. And the thing is, yes, it is kind of a lead up to the World Cup. All these matches basically are practice matches to the 2026 World Cup. And I think this what Kesar is saying about Surya being like his captaincy is under scanner. I think his captaincy will be under scanner after the 2026 World Cup. अब के लिए I think they will not meddle with the captaincy for now. No, I didn't say it's under scanner. I didn't say it's a मैं क्या बोल रहा था And Didi. no, What I thought was like, he's the stature of T20 cricketer that he is, that performance, what we've seen in MI or what we've seen in IPL hasn't really spilled over to the India performance. That's what I said. So no, from that standpoint, this no, tournament becomes very important for him. but tell me, like, if a guy has this average and this strike rate over 83 matches, then और क्या कर सकता है? Like, how much will it be better? I want to. Maybe you're right. Actually, maybe the bar that he set so high in MI makes us probably want. I agree with you. Fair enough. In fact, his IPL average for India is average for India is better than his IPL average, which is IPL average is 35.04 and strike rate is 48.65, which is lesser than his India performance. So yeah, that says what needs to be said. अब आज सुपर चैट की वर्षा हो रही है. आज साहिल को देखकर और एक सुपर चैट आया एंड डायरेक्टेड टुवर्ड साहिल. मृत्युंजय राउत हैज सेंट अ 40 रुपी सुपर चैट एंड ही सेज, साहिल सर, हु इज नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन, गिल और अय्यर? अब ये भी चला था बीच में. शुभमन गिल. तो आपके सवाल का जवाब आ चुका है. वो जो स्टोरी आया था उसको सिरे से नकार दिया. नहीं, मैं कोई स्टोरी को सही गलत नहीं बोल रहा. उन्होंने मेरे से सीधा पूछा कौन बनना चाहिए. शुभमन गिल. सिंपल. स्टोरी वोरी में कहां नहीं, वो पूछ रहा कौन बनना चाहिए, नहीं वो पूछ रहा है कौन बनेगा.
बनेगा। हाँ बनेगा, शुभमन गिल बनेगा, खत्म, तो एंड मतलब ऑफ आप एक तरह से नकार रहे हो ना मतलब स्टोरी को, एग्जैक्टली नकार रहे एग्जैक्टली हो, मानो ना बात, अरे कहाँ फंसा रहे हो मेरे सीधी को बात, इन नो बकवास। शब्दों के खेल हाँ, में, चंद्रेश भाई। किसी और की स्टोरी को गलत ही एक्चुअली बात तो सही है। नहीं नहीं नहीं, Abhi, there Anyways, can be an interesting twist. I'm saying that if Shubman doesn't go for the Australia one days and that's going to be and Rohit interesting. Yeah. and Rohit Sharma goes for the goes as captain, then there could be suddenly a रोहित case of शर्मा will go as captain. okay, 100 100%. yeah, then there could be a case of Shreyas Iyer being made the vice captain. If Yeah. Shubman Gill is not going, if Shubman Gill if he's not playing the one day, I'm saying he will play the T20s, of course. If there is one format जहाँ पे शुभमन का actually जगह बनता है, it is the one day format. नहीं, but मैं बोल रहा हूँ if he is taking a break because he is playing this Asia Cup, then he will play all 4 test matches. ब्रेक का पूरा चांस है, He's ब्रेक का शुभमन का exact. पूरा चांस है, या Yeah, But रोहित absolutely. तो ये ऑस्ट्रेलिया टूर का कैप्टन तो रोहित है ओडीआई, Yeah. और ठीक है, I mean there should be no doubt on it. अभी फिलहाल तो रोहित, why are we even discussing ओडीआई कैप्टनसी? अभी तो जब तक रोहित नहीं, रिटायरमेंट नहीं लेता रोहित ही है। श्रीनी, वो 40 रुपए का सुपर चैट आया, इसलिए डिस्कस करना पड़ा। हाँ, तो रोहित के बाद में कौन है? अरे That's what. रोहित शर्मा। अच्छा नहीं, अभी और एक सुपर चैट आया शुभम गर्ग का 100 रुपए वाला, एंड दिस इज फॉर द्वैपन। डीडी सर, वेयर इज द परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप बाय स्काई? जस्ट वन सेमीफाइनल इनिंग वर्सेस इंग्लैंड, अदर देन दैट ही हैज फेल्ड इन ऑल इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप मैचेस फ्रॉम 21 to 24. Did your answer better be worth 100 rupees? I'm telling you. No, the thing is, I remember a superb innings of 60 odd against South Africa in the 2022 World Cup, which we lost. He was the only guy who batted against super South African attack, probably in Perth, if I'm not wrong. That was a terrific innings in the last 2024 World Cup. Yes, maybe there. I do not exactly remember. Though I covered that tournament, but I do not exactly remember a defining knock by him. But the 2024 T20 World Cup will always be remembered for Surya Kumar Yadav's catch. So yeah, but Okay. and yeah, that's what it is. Today, one final And question. he said that he played a super innings against England. That was a chaotic match, so much rain. So अगर semi-final में run कर रहा है तो हो ही गया ना. Absolutely. One final question, and again, this is coming for Dwaipan. Out of syllabus question, DD sir, what are your thoughts on Duleep Trophy? Iyer and Jaiswal fail, but Ruturaj Gaikwad scored fantastic 183 that we spoke about at a strike rate of 89 on a difficult pitch. So again, people have assumed things on the basis of a scorecard. किसको पता डिफिकल्ट पिच था वो, मतलब हाँ, वही बोल रहा था। मैं I was just reading Manuja's report to find out actually पिच था कैसा, हम लोग तो देखे नहीं ना, she just mailed her report, मैं तो वो पढ़ रहा था अभी। So, but having said that, Ruturaj Gaikwad is a very good player. Let me say this, like he is a very good player, and I think he's a better red ball bat than a white ball bat. Like he has a bit of a problem against short ball that I have seen. Like short ball, when it comes at a pace at 145, when it comes up, sometimes he has a problem. But he's a very sincere cricketer, works on everything, and he has probably worked it out. I think he's a better red ball cricketer and should have a good red ball future. I don't, but there are a lot of names, lot of contenders. But I have a lot of time for Ruturaj Gaikwad, the player. I have seen him play some excellent knocks in all formats, and especially our T20, because I follow CSK. So he's really a crack player. Absolutely. Thanks a lot, gentlemen. We have overrun our time today. Thanks a lot because the discussion was so free flowing. Thanks a lot, Srini, for making a comeback. I hope you promise that you will make it a regular feature. Dwaipan, as always, you are the star because everybody's directing all the questions. I have some 500 unanswered questions. I'll send it to you via email so you can, like in the old days, answer the fan mail. And Sahil, thanks a lot as always for bringing in 120 rupees
today to the chat. And Didi for 100 rupees from your end. Thanks a lot. That will be sent to you via money order. Thanks a lot, everybody. We'll be back tomorrow. To everybody watching, remember to like, share, subscribe, and comment, and be part of the conversation. Till then, we'll see you tomorrow. Take very good care of yourselves. It's goodbye and God bless.